If these 9 lessons were taught to all of us in school, life would have been different. If these lessons are taught to our children, their life would be different. Life teaches us, life gives us lemons, we just don't know what to do about it. I am in this video talking about 9 certain things if we were taught in school to all of us, our life would have been different. And we don't want to repeat the same mistake with our future generation. Watch me till the end and trust me, rule number 7 will change the way you think of life, and that itself can change the game for your success. स्कूल में ये तो सिखाया कि इक्वेशन क्या है, अलजेब्रा कैसे करना है, हिस्ट्री की डेट्स याद कराई, हिंदी में ऊ की मात्रा और आ की मात्रा सिखाई, बट किसी ने ये नहीं सिखाया वेल्थ कैसे बिल्ड करनी है, फेलियर्स को कैसे फेस करना है और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है. टुडे दिस वीडियो विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड इन लास्ट 20 years which was taught to me in school. Lesson number 1, emotional mastery is more important than IQ. You know, जिंदगी में हमने क्या सीखा है स्कूलों में कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप सक्सेसफुल हो, बट दैट इज रॉन्ग. यू नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट. यू नीड टू हैव इमोशंस इन कंट्रोल, अंडरस्टैंड इमोशंस बेटर. अगर आप देखो जितने बड़े लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल पीपल है, द स्टडीज आर शोइंग दैट देयर EQ इज हायर देन देयर IQ. बिकॉज जब लाइफ आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालती है, जब लाइफ अनफेयर लगती है, जब लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं, रिजेक्शन मिलते हैं, आर वी रेडी टू अंडरस्टैंड कि उनको डील कैसे करना है, उनको फेस कैसे करना है, और वी आर ओनली इंटेलिजेंट थ्रू आर बुक्स. So school didn't tell us how to deal with conflicts, to rejections, and how to deal with failures. This is one lesson that if it was taught in school, things would have been really different. मनी मैनेजमेंट इज अ लाइफ स्किल एंड नॉट अ करियर स्किल. एक बढ़िया फैक्ट समझिए, 70% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर लिविंग पे चेक बाय पे चेक. वाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी तो सिखाई ही नहीं. किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि वेल्थ कैसे बिल्ड की जा सकती है, पैसिव इनकम क्या होता है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, आप जो पैसा हर महीने कमाते हैं उसमें से सिर्फ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज वी नेवर लर्न दिस. योर मनी हैबिट्स डिसाइड योर फ्रीडम. Rich people think of long-term investments like compounding, passive income, mutual funds, SIPs over 20-30 years. Whereas poor people look at short-term gratification कि आज कुछ करें और कल पैसा आ जाए. We need to understand कि अगर हमको स्कूल में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, बजटिंग कैसे करनी है, फाइनेंस मैनेज कैसे करना है, SIPs कैसे खोलनी है, कितने की खोलनी है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, अगर ये सब सिखा दिया होता, जस्ट इमेजिन आज फाइनेंशियल जर्नी, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्ट्रेस की कैसी गेम होती है हमारी. लेसन नंबर 3, मॉर्निंग रूटीन और उसकी इंपॉर्टेंस. जिंदगी में बहुत लेट काम करते करते, एजुकेट होते होते, कोर्सेज पढ़ते पढ़ते, आई अंडरस्टैंड एंड आई रियलाइज दैट व्हाट इज द पावर बिहाइंड वेकिंग अप एट 4 AM एंड 5 AM इन द मॉर्निंग. देयर इज एन ऑथर कॉल्ड रॉबिन शर्मा, उनका एक 5 AM क्लब भी होता है, एंड देयर इज अ बुक ऑल्सो विच आई हैव पुट इन डिस्क्रिप्शन विच इज अ 5 AM क्लब. I realized very late in my life, maybe at the age of around 32 or 33, that what is the magic that happens at 4 AM. On that, I have made a separate video also. But if we were taught this in school, that what happens at 4 AM, the kind of power, the kind of creativity, the kind of ideation, the kind of creation that we can create is enormous. We are always ahead of the entire world. Before the world gets out of the bed, we are always ahead of them. What magic happens? All the famous people in the world, all the successful people in the world, they are early risers. Why? If this secret or this subject was a part of our school teachings, just imagine how life would be. I am not saying that 100% students will pick it up, but what if 10, 20 people picked it up? What if I started waking up in my life back in 16 or 17 at 4 AM instead of at 32? I would have earned those many number of years and created something so magical that it would have been phenomenal. Lesson number 4, स्कूल ने हमें कंपटीशन सिखाया, कोलैबोरेशन नहीं, नेटवर्किंग नहीं, हमें पीयर कैसे मैनेज करना है वो नहीं सिखाया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन स्कूल वी गेट सो कॉम्पिटिटिव विद आवर नंबर्स एंड ग्रेड्स एंड मार्क्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू कोलैबोरेट. वो कहते हैं कि आपके 5 दोस्त रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप कैसे हो. Closest 5 people. Did school teach us how to choose those 5 people? Did school teach us how to network with right kind of people which can be more collaborative instead of competitive? If all this was taught in school, today life would have been very different. Lesson number 5, manifestation. Today we are learning, talking about manifestation, doing everything possible. There are coaches, there are courses. What if it was taught to us in school that whatever we think, whatever we visualize can be our reality? सोच के देखो, एक 16-17 साल के बच्चे को जो स्कूल से निकलता है, उसको मैनिफेस्टेशन अगर आ गई तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर सकता है. अगर हमने मैनिफेस्टेशन पहले सीख ली होती,
आज हमारी अप्रोच क्या होती टुवर्ड्स लाइफ? I urge all the schools to teach students what manifestation is all about, and also go through all my 9 lessons and see what can be incorporated. Trust me, we will be brighter and better students. Lesson number 6: learning should never end. You know, when we pass out from our schools and colleges, usually we get disconnected. We just become alumni of the school and that's it. And we start searching for digital marketing courses or some other courses and AI courses to institutions which are like only running those courses. What I feel is that schools should have courses for alumni and students who have passed out with no age barrier, be it 30, 35, 40, 45, 50. You stay connected with your school, you stay connected with your colleges, you keep learning, keep upskilling, and that's how you stay connected also, and your learning never stops. School में सिखाया नहीं जाता that after school and college, you don't go only into your career. You go wherever you want to go, but you also keep learning and upskilling yourself. Lesson number 7: फेलियर क्या है? स्कूल ने फेलियर को हमारे लिए पनिशमेंट बना दिया. Whenever we used to fail, we used to be punished. Whenever we used to not perform, we used to be punished. I, as a kid, remember, and my teachers, if they ever see this video, how much I used to get punished because of course, my mistakes and my being notorious as a kid, what I was. बट उसको पूरा का पूरा एक पनिशमेंट सिस्टम बना दिया फेलियर को. वेयर एज अगर स्कूल में ये सिखा देते दैट फेलियर इज द लर्निंग, what you learn from failure becomes your stepping stone, and that's how you climb up wherever you want to reach in life. Lesson number 8, but trust me, lesson number 9 is my favorite. However, 8 says time management. हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया था that how we can manage our time to make it more productive. मुझे लगता है 9th, 10th, 11th और 12th में ही हमको scheduling सिखा देनी चाहिए. How to manage our day or our time to get the most of it. Once we learn scheduling, I learned very late in my life that everything that you schedule gets done. Whatever is not scheduled will never be done. Whatever is measured is also done. Whatever is not measured will never be done. So if we would have learned this skill back in the days, things would have been very different. Number 9, and as I said, my favorite. What is the power of asking right questions? स्कूल में ना एक मिथ हमें सिखाया कि हर सवाल का आपको जवाब आना चाहिए. That was fine to get your marks and to pass out or to achieve certain numbers and move forward. But the real game is asking right questions. Because as I have mentioned earlier also, asking right questions can change your life. अगर आपको सवाल पूछना आ गए, आप वही सुनोगे जो आप सुनना चाहते हो. बट स्कूल में, कॉलेज में तो सिर्फ सवाल हमसे पूछे गए, हमें सवाल पूछना कभी सिखाया ही नहीं. सो आई फील दैट स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड अंडरस्टैंड द पावर एंड आर्ट of asking right questions. If you like the content, please subscribe to the channel, as every subscribe of yours motivates me to create more such content. Until then, it's your friend Sumit Khubchandani.